Morning, student. Good morning, student. Today is the third day. We are going to start our class. Inshallah, we are going to start now the second chapter, Fundamental Rights and Directive Principles of the State Policy. One thing I would like to ask, did you understand? Did you follow whatever I'm explaining? If you people are having any doubts, you can ask me freely. Feel free to ask me. Second chapter. Fundamental rights and directive principles of state policy. Okay, student. Second chapter, fundamental rights and directive principles of state policy. In this, we are having two questions that carries 10 marks and three questions that carries 2 marks. Only in this chapter, we are not having SAQs, that is short answer question of coming of 5 marks. We are not having in the second chapter. First, let us go with the 2 marks. For 2 marks, three questions it carries. First, we'll go with the Gandhian principles. Okay, student, let us go with the Gandhian principles. So, in article 40, 49, 49, 48A, these all articles are there. Article 40, 49, 48A comes under Gandhian principles. So, first let us understand what are the principles that we are following in the second chapter in the Gandhian principles. First is promotion of cottage industries. Of cottage industries. Students, please try to underline the important things. Promotion of cottage industries. Second one, it is promotion of education and economic in weaker section of society. I'm underlining this. Third point. Prohibition of intoxicating of drugs.
Fourth point, preserving forests and wildlife. Preserving forests and wildlife. When they are going to ask about Gandhian ideas, so you can write the Gandhian principles or Gandhian ideas. The question comes Gandhian principles or ideas. I'm writing here with blue. Ideas, so that you can understand. In the question paper, it comes Gandhian ideas or Gandhian principles. That's it. You can mention the article number and you can write these 4 points. Ideas. Ideas. You can copy this. Next, we'll go for 2 marks. I'll just give to 2 to 3 minutes to copy down. Yeah, I did not write 46, 47. Purposely, I did not write. You may not understand it. So many articles you may not remember. I am writing here. You can write these 4 points also. Ideas or principles. If there is any doubt, you can ask me. You can write only these 4 points for this thing, for 2 marks. And you can mention this also, and safeguard of environment. I'm rubbing the board, students. I think you have copied down. So again, we are going with 2 marks. We are going with very short 2 marks. The next it is socialistic principles. What are these socialistic principles? Let us try to understand. Article
38, 39, 41, 42. Under Article 38, 39, 41, 42 comes under the socialistic principles. What are these socialistic principles? What is it explaining? Equal pay for equal work. What is this equal pay for equal pay? There is no discrimination between male and female. Earlier, there were discriminations while paying the wage, the salary, whatever they are working. So, after independence, in the article, they had mentioned that there is no difference between the equal in paying the salary. All are getting equal amount and whatever the time is allotted. जो कोई भी काम कर रहे हैं सबको एक ही नजर से देखा जा रहा है, सबको एक ही तरीके से तनख्वाह दी जा रही है या रोज का जो भी कमा रहे हैं सबको एक जैसा था. नहीं तो पहले लेडीज को कम, जेंट्स को ज्यादा ऐसा दिया जा रहा था. प्रोविजन फॉर adequate means of livelihood. Adequate means of livelihood. Again, I'm telling to underline equal pay for equal work, provision for adequate means of livelihood. This third point is decentralization of wealth. Of nation's wealth. Preserving the health and of workers. Etc. This etc means etc. So, socialistic principles of 2 marks we are going. So, in this article 38, 39, I'm again repeating 38, 39, 41 and 42 comes under socialistic principles. There we are having 4 points. You can go with equal pay for equal work, means सबको एक जैसा पैसे और एक जैसा काम. Provision for adequate means of livelihood, सबको सही खाना और 3 वक्त का खाना दिया जाए. पहले ब्रिटिशर्स के पीरियड में यहाँ पर बहुत से लोग स्टार्वेशन करे, हंगर थे, बहुत से लोग के पास खाना नहीं था, भूखमरी बहुत ज्यादा थी ब्रिटिशर्स के पीरियड में.
ये सारी चीजें देख के सभी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ नेशंस वेल्थ, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब सबको बांटा जाए, जो भी नेशन का वेल्थ है गरीबों में भी दिया जाए, कोई भूखा ना रहे, ये सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स थे। प्रिजर्विंग द हेल्थ एंड द वेल्थ ऑफ द वर्कर्स, एक और चीज इसमें ये है लास्ट, सबकी हेल्थ और सबका वेल्थ का, और सभी वर्कर्स हो, कोई भी कास्ट रिलीजन हो, किसी में फर्क नहीं किए बिना गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है, इसीलिए सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खोले गए हैं, फ्री में इलाज किया जा सके गरीब लोगों की, और जिसकी भी किसी के पास भी खाना नहीं है वो लोग को एवरी मंथ एज अ पेंशन के तौर पे पैसा दिया जा रहा है स्टेट्स में। ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई क्वेश्चन आया सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स बोल के, तो आप लोग ये आंसर लिख सकते हैं। सोशलिस्टिक आप क्वेश्चन पेपर में आप पूरा डिटेल में नहीं क्वेश्चन करेंगे, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स। फर्स्ट हम गांधीयन प्रिंसिपल्स पढ़े, बस 2 वर्ड्स में पूछा जाएंगे क्वेश्चन, ये भी 2 वर्ड्स ही आएगा। अगर आप आर्टिकल नंबर लिख के अंडरलाइन करके ये सारे पॉइंट्स अगर लिखे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा असर होगा, इंशाल्लाह आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे। जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हम बोल रहे हैं क्लास में, स्टूडेंट्स प्लीज लिसन केयरफुली एंड फॉलो दैट। You people can write down these points. We'll give you 2 to 3 minutes. If there is any doubt, you people can ask. Okay, students, I'm going to rub this. One more thing. Last in the month of March, we had exam. In that, the question paper, there was a question of 2 marks from second chapter, right to equality. The question was this much, right to equality. You have to answer this question. So we are going to study now fundamental rights. In that fundamental rights, the first thing we are going to study about the right to equality. When I'm going to explain this fundamental right, in that it will come the right to equality. अपन fundamental rights का 10 marks का आंसर अभी पढ़ेंगे, उसी में ये 2 marks का भी आएगा। लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था एग्जाम में
जो मार्च में हम लोग 2023 में एग्जाम लिखे, उसमें ये क्वेश्चन आया था, राइट टू इक्वालिटी। हम फिर से ये आंसर पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स में 10 मार्क्स में। ये 3 क्वेश्चन थे। एक था गांधीयन प्रिंसिपल, सेकंड था सोशलिस्टिक प्रिंसिपल, थर्ड वन है राइट टू इक्वालिटी। अभी अपन 10 मार्क्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट अपन फंडामेंटल राइट्स को बैकग्राउंड में जाएंगे। FR मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। अपन पूरा ईयर पढ़ लिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फिर से अपन रिपीट करेंगे ये फंडामेंटल राइट्स है क्या, ये कहाँ से आया, मेन फंडामेंटल राइट्स का मीनिंग क्या है। ये है बुनियादी हक अपने, फंडामेंटल यानी बेसिक राइट्स यानी बुनियादी हक। इसे हमें बहुत सारा हेल्पफुल हुआ अपने रोजमर्रा की लाइफ में। ये हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, जो पेन हमारे पहले के लोग उठाए, वो आने वाला जनरेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होना है बोल के ये फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीजें ऐड हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये फर्स्ट फंडामेंटल राइट आया कहाँ से? इंग्लैंड में 12th सेंचुरी ईयर 1215 में मैग्ना कार्टा बोल के स्टार्ट करे। मैग्ना कार्टा है क्या? मैग्ना कार्टा का मीनिंग है फ्रीडम। जो पहली बार इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था, वहां के जो पोप्स ये वो थे, वो लोग जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे सिटीजन्स ऑफ इंग्लैंड के लिए, तो पहली बार 12th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। फिर यूएसए में 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ। सेम 17th सेंचुरी में ही फ्रेंच में स्टार्ट हुआ। मैं एक बार बस आपको एक इंट्रोडक्शन देना चाह रही हूँ इसका। मैग्ना कार्टा मीन्स फ्रीडम। 12th सेंचुरी में 1215 में प्रॉब्लम हुआ था। यूएसए में 17th सेंचुरी 1791, 1789 में फ्रांस में, पर ये फंडामेंटल राइट्स मेनली हम यूएसए से लिए हैं और ये पार्ट 3rd में है। पार्ट 3rd से लिया गया है। अपने पास 25 पार्ट्स है। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है? 25 पार्ट्स है। उसमें पार्ट 3rd से लिया गया है। ये फंडामेंटल राइट्स को यूएसए से लिया गया है। बेसिक इसका जो आइडिया लिए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर्स थे, वो लोग यूएसए से पार्ट 3rd में डाले फंडामेंटल राइट्स को। सो अपन इन डेप्थ अभी पार्ट 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। आर्टिकल नंबर 12 से लेके 35 के बीच में है ये सारा। ये था थोड़ा सा बैकग्राउंड जो मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोलना चाह रही हूँ। मैग्ना कार्टा 1215 में जो स्टार्ट हुआ उससे आइडिया लिया गया था। 12th सेंचुरी के बाद 5 सेंचुरीज तक कोई फ्रीडम के लिए आवाज नहीं उठाए। फिर अमेरिका एंड फ्रांस में आवाज आई। उसके बाद हमारे इंडिया में 19th सेंचुरी में जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, ब्रिटिशर्स से लड़के इंडियंस ये फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट करे, तो जब हमें आजादी मिली तो
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे चीजें, इसीलिए इंडिया को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड डिटेल्ड एंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता। कल हम आंसर पढ़े थे, उसमें वही था। फर्स्ट पार्ट क्या था? रिटन एंड डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। यही वजह से है कि रिटन एंड डिटेल्ड एंड लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। हम कल 10th का एक पॉइंट पढ़े थे, फंडामेंटल राइट्स। वो बहुत छोटा सा पॉइंट पढ़े हैं, मगर अब हम उसको इन डेप्थ इन डिटेल में पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी, फर्स्ट वन, आर्टिकल 14 से 18 तक। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक कल हम पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अब ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, आप केयरफुली अटेंटिवली सुनिए। जितना भी हो सके आप लोग ये सारे आर्टिकल्स लिखे, इसको छोटे छोटे पॉइंट्स भी अगर आप एग्जाम में डाल दिए तो इंशाल्लाह आपको स्कोरिंग रहेगा इंशाल्लाह। राइट टू इक्वालिटी में फर्स्ट वन 14th वाला क्या है? हम खाली ये 14, 18, 19, 20 बोल के कल एक कुछ थोड़े से टाइम में कंप्लीट करे थे। अभी वैसा नहीं, अपन अपने को डिटेल में इंशाल्लाह अभी पढ़ेंगे। आर्टिकल 14 में क्या है, एक एक खोल के पढ़ेंगे अभी। ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। राइट टू इक्वालिटी में ये यहां से यहां तक है, उसमें 14th वाला है राइट टू ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ। 15 में नो डिस्क्रिमिनेशन no discrimination of sex, color, caste or religion. It is of 10 marks. Sixteenth one. Sixteenth one, no discrimination. No discrimination of employment opportunities. Let us underline equal before law of sex, color, caste or religion, of employment opportunities. So, right to equality in that article 14 to 18, all are equal before law. 15th one, no discrimination of sex, color, caste or religion, and no discrimination of employment opportunities.
17th one, let us see. Untouchability was abolished. Was abolished. नो डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मीन्स जो भी काम दे रहे हैं उसमें किसी को कोई में तफर्रुकी नहीं किया जाएगा। फिर 17th सेंचुरी में सॉरी 17th आर्टिकल 17 सॉरी 17th आर्टिकल में अनटचेबिलिटी वाज अबॉलिश्ड, छुआछूत को खत्म किया गया था। अनटचेबिलिटी अबॉलिश मीन्स जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ही एक लो कास्ट के थे, उनकी फैमिली और उनका सारा कास्ट जो प्रॉब्लम्स फेस करे हैं, ये नेक्स्ट जनरेशन ये प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना, बल्कि आर्टिकल में खुद ही मेंशन किया गया है कि अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश। अगर ऐसा कोई फर्क कर रहे हैं तो सीधा सीधा उन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ेगा। अभी तो ये चीजें कहीं दिखाई नहीं देती है, कहीं सुनाई नहीं देती है। अभी तो उन लोग को रिजर्वेशन हुए देके बहुत अच्छी तरीके से रखा गया है। सो पहले के दौर में ये छुआछूत बहुत माना जाता था, तो इसको खत्म ही करे। आर्टिकल 18 में नो टाइटल्स, नो टाइटल्स, only excluding military or academics. नो टाइटल्स एक्सक्लूडिंग मिलिट्री और एकेडमिक्स। इसका मीनिंग क्या है, अपन इसको देखेंगे। आर्टिकल 18 में ये लिखा गया है कि अब कोई एक पर्सन है जो बहुत ही कोई चीज में आगे है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर है, वो लोग को टाइटल्स मिले थे। वैसे अगर फॉरेन से अगर कोई टाइटल मिल रहा है तो इंडियंस को चाहिए कि वो एक्सेप्ट नहीं करे अनलेस एंड अनटिल ये गवर्नमेंट की परमिशन ले। हाँ, अगर मिलिट्री और एकेडमिक्स में कोई वो लोग को अगर टाइटल मिल रहा है तो वो लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को जैसे टाइटल्स मिले थे, वैसे दूसरों को अगर टाइटल्स अगर मिल रहे हैं तो वो लोग नहीं ले सकते हैं। अभी आर्टिकल ये 14 to 18 फिनिश हो गया। सेकेंड वन देखना है फंडामेंटल राइट्स में। सेकेंड वन क्या है, राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम। आर्टिकल 19 to 22 है इसमें। 14 और 18 अपन कंप्लीट करें। राइट टू इक्वालिटी में 4 थिंग्स है, 1 2 3 4 5 1 3 या आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन।
What is this freedom of speech and expression? Right to freedom of right to freedom में right to freedom of speech and expression का मीनिंग ये है कि पहले ये क्या था कि कोई ब्रिटिश के पीरियड में स्पेशली अगर कोई कुछ बोल दिए तो वर्नाकुलर एक्ट आप देखे थे, आर्म्स एक्ट देखे थे, वो एक्ट्स में ब्रिटिशर्स अननेसेसरी कोई भी वजह के बिना इंडियंस को जेल में डाल देते थे। 2 इयर्स तक भी अगर डाले तो किसी को कोई परमिशन नहीं थी पूछने के लिए। तो ये सारी चीजें देख के ये ऐड करे आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम अपने फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कहीं भी रह सकते और कोई भी कुछ भी अपन अगर हमें तकलीफ हो हम बोल सकते। इवन हम यहाँ पे पीएम को भी कुछ भी बोल दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अगर अमेरिका में अगर आप कुछ भी अगर बोल दिए वहां के प्रेसिडेंट को तो फौरन जेल हो जाती है अमेरिका में। मगर अपने इंडिया फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, हम हमारी आवाज को रख सकते हैं। अगर हमें कुछ बोलना चाह रहे तो फ्रीली हम बोल सकते। इसी का मीनिंग है फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम है। क्या फ्रीडम है उसमें, क्या आजादी है हमें, हम अपना स्पीच एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारे फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं ये आर्टिकल के तहत। ट्वेंटी में no more than once punished, no more than once punished for the same reason। इसमें ये बताया जा रहा है आर्टिकल 20 में कि अगर कोई इंसान कोई गलती कर रहा है तो एक बार उसमें उसको जेल में डाल दिए, फिर सेम उसी को वही गलती के लिए फिर सेकेंड टाइम डालना, ये आर्टिकल 20 में बैन है। पहले क्या था ब्रिटिशर्स के पीरियड में, दे कुड पनिश फॉर मोर देन वंस, twice thrice for the same things, for the same mistake, but in article 20 they have written that they were not punished only for once, one mistake only once they have to be punished। and article 21 article 21 we are having right to life। what is the meaning of right to life? In our free independent India we are having the right to live। and article 22 without information no arrest। मैं कल भी बताई और थोड़ी देर पहले बताई थी कि पहले क्या था, विदाउट इंफॉर्मेशन अरेस्ट किया जाता था और किसी को वो नहीं था कि कुछ पूछे कि क्यों अरेस्ट किया गया है, क्यों हमें जेल में डाला गया। वही देख के आर्टिकल 22 में ये डाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में के विदाउट इंफॉर्मेशन नो अरेस्ट, किसी को भी विदाउट इंफॉर्मेशन अरेस्ट नहीं कर सकते। अपन अरेस्ट करने से पहले उनको वारंट जारी किया जाता है कि उनको अरेस्ट करने वाले हैं और 24 घंटे पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जिस किसी को भी हम अरेस्ट कर रहे 24 आवर्स पहले इन्फॉर्म करना, उसके बाद ही हम अरेस्ट कर सकते, वरना नहीं अरेस्ट किया जा सकता। फिर जो पर्सन को अरेस्ट कर रहे उन्होंने भी
बोल सकते और हेल्प मांग सकते पुलिस से कि नो विदाउट इंफॉर्मेशन हमें अरेस्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अथॉरिटी हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है आर्टिकल 22 के तहत। अपन थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। थर्ड पॉइंट है 23 to 24। ट्वेंटी थ्री में अपन ये देखेंगे, prohibited forced labors। फोर्स्ड लेबर्स, इसका मीनिंग क्या है? प्रोहिबिटेड फोर्स्ड लेबर्स यानी लेबर्स को कोई फोर्स से, कोई जबरदस्ती से काम पे नहीं लेना है। पहले क्या था, लेबर्स को जबरदस्ती काम लिया जाता था अंग्रेजों के पीरियड में। बाद में इसको आर्टिकल 23 में डाले हैं कि कोई किसी को भी फोर्सली वर्क नहीं ले सकते, आर्टिकल 24 में। चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, जो भी 14 ईयर्स के नीचे है वो लोग को काम पे नहीं लेना, परमिशन नहीं है। अगर कोई वर्क ले रहे हैं 14 ईयर्स के बिलो के बच्चों को, तो वो लोग को जेल होगी। इसीलिए बीच में जब गवर्नमेंट पूरा जब चेक कर रही थे, तो जब तकरीबन लोग जो भी 14 ईयर्स के बच्चों को काम पे ले रहे थे निकाल दिए। और गवर्नमेंट ये चाह रही है कि बच्चे स्कूल जाएं और वो लोग को मिड डे मील भी दिया जा रहा है, स्कूल में बच्चे के खाना भी खा सके, पढ़ाई के साथ खाना भी फ्री है स्कूल्स में। फोर्थ देखेंगे अपन अभी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। आर्टिकल 25
and 26. आर्टिकल 25 और 26 में पढ़ेंगे फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आर्टिकल 25-26 में अपन पढ़ेंगे कि फ्रीडम टू प्रोपोगेट रिलीजन, इसका मीनिंग क्या है। अपन अपना रिलीजन जो भी है उसको हम फैला सकते हैं, अपन अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस रख सकते हैं। We can tell anything in our religious institution. There are no restrictions for our religious institution. And we can maintain our religious institution in the article 26 is there. Institution. We can have our own religious institution and we can propagate our religion. So we are having here right to equality. Again, I am repeating article 14 to 18 and right to freedom in article 19 to 20. Right to against exploitation, article 23 to 24. And the fourth one, it is right to freedom of religion, article 25 to 26. Now we are going with the fifth one. Cultural and educational rights. Let us underline. Students, always remember that you have to underline the main points. Examiner will see your main points and he may give you a good marks. Sorry, 25 to 28. This is cultural and educational rights, comes under 29 to 30. Okay, children, right to freedom of religion, 25 to 28. Cultural and educational rights, 29 to 30. In 29, article 29, we'll see about the no discrimination in admission to any schools. No discrimination okay, there should be no discrimination in education. In article number 30, minorities also
also can have education. Cultural and education right, we are having fifth one, article number 29 to 30. No discrimination in admission in schools or colleges or universities, anything. I am writing very shortly. In brief, I am explaining because we are having very less time. We are having in next month, we are having exams. So in brief, I am explaining 30th point what it is. Even minorities, all they can take the admission and they can have the education. Clear? And article 31, it is a in a other thing like article 31, I am writing with the other color, that it is right to property. Why I am writing this? Because earlier we were having 7 rights. In fundamental rights, we were having 7. But one right to property, it was a special right that has been removed by the amendments. They have removed and they have given the right to property in Article 31. Otherwise, in 19F, it was with the help of amendments, they have changed it and they have given in the Article 31 right to property. That we can mention. Okay, students, this I have written. One more, it is last one. Inshallah, tomorrow I'll continue with the last one. Cultural and educational right we have done. Constitutional remedy it is. Constitutional remedy, the last one it is. Tomorrow we'll continue with that. You can copy it down from the board, this thing. I want to just recap this. Right to equality, right to freedom, right against exploitation, right against exploitation, Article 23, 24, right to freedom of religion, cultural and educational rights, Article 29 and 30. If there is any doubt, you can ask me. This is in very, very brief, I'm explaining. The last one is there. Tomorrow we'll explain the same thing.